Assalamualaikum dear students of class 3. How are you? Hope you all are good and safe at your homes. Dear students, I welcome you all in your online social studies class. Dear students, as you know that in our previous video we have revised about the topic of two provinces, Punjab and Balochistan. Today we are going to revise about Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. Okay, let's open your book page number 56. In our previous video we have revised about Sindh and Balochistan. Today we are going to revise about Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. For revision, kindly open your book page number 56. Here is the first topic is given Punjab. Punjab is mostly a plain covering eastern parts of the country. Some areas in the north are hilly plateaus. पंजाब की ज़्यादातर इलाका जो है वो मैदानी इलाका है, प्लेन इलाका है बिल्कुल. द रिवर इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज मेक द प्लेन्स वेरी फर्टाइल. रिवर इंडस की वजह से पाकिस्तान कह रही हूँ, पंजाब की जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ है. मेक द प्लेन्स वेरी फर्टाइल, वहाँ के जो मैदानी इलाका है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है. दिस प्रोविंस इज़ रिच इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन. ये जो सूबा है ये एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत में की वजह से ज़राअत में बहुत रिच है एंड फूड प्रोडक्शन में. इट इज़ नोन एज द फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान. दैट्स वाई पंजाब इज़ कॉल्ड द फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन. Okay dear students, Punjab is known as the food basket of Pakistan because of its agriculture and food production. Punjab has developed industries especially in textile and dairy products. पंजाब में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई हैं. ज़्यादातर टेक्सटाइल और डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे. टेक्सटाइल मींस कपड़े की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं. द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ लाहौर. द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब इज़ लाहौर. ओके, the next one is Khyber Pakhtunkhwa. Mountains and forest cover much of the province. Khyber Pakhtunkhwa का जो सूबा है वो ज़्यादातर किस चीज़ से कवर है? माउंटेन से एंड फॉरेस्ट से. वहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं और जंगलात बहुत ज़्यादा हैं. द प्रोविंस हैज़ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, देवदार एंड शीशम. इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. खैबर पख्तूनख्वा में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह. माइनिंग इज़ द मेजर इंडस्ट्री ऑफ द प्रोविंस. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ माइनिंग? माइनिंग कहते हैं कान कुनी को. जैसे कि अगर कोयले की कान है तो उसकी खुदाई करके जो कोयला निकाला जाता है उसे माइनिंग कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द माइनिंग. Mining is the major industry of the province. Wood carving and furniture making is also an important industry. The Khyber Pass links the province of Afghanistan. Due to thick forest, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छी किस्म की लकड़ी पाई जाती है और उसी लकड़ी की वजह से वहाँ पे वुड कार्विंग एंड फर्नीचर मेकिंग का काम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. द खैबर पास लिंक्स द प्रोविंस टू अफ़गानिस्तान. खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर पास है वो सूबे को किससे मिलाता है? अफ़गानिस्तान से मिलाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, hope you have memorized the note on Sindh which have given to you in your homework in your previous class. Today you have to read book page number 56 very carefully and you have to memorize the first two questions from your fair copy of lesson number 15, provinces. Question number 1, how many provinces does Pakistan have? Name them. And question number 2, name the administrative divisions of Pakistan. Dear students, after memorizing these two questions, you have to do written practice on your rough copies. Okay, we will meet in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.